हेलो एवरीवन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। उन आर्टिकल्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। उसमें 22 पार्ट्स है। 22 पार्ट्स में से आज हम देखेंगे पार्ट 4 जो कि बोलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये गांधीयन प्रिंसिपल्स भी है। It is a set of guidelines and principles in the Indian Constitution that guide the government in making laws and policies. The directive principles of state policy are found in Part 4 of the Indian Constitution and Article 36 से लेकर Article 51 तक है। Directive principle of state policy. The directive principle of state policy are not directly enforceable by courts, but the state is required to apply them when making laws. The directive principle of state policies complement the fundamental rights which are legally enforceable. The directive principle of state policy were inspired by the directive principles in the Constitution of Ireland. The founding fathers of the Indian constitutions were aware that the country would face many challenges after colonial rule, including poverty, hunger, and socio-economic inequalities. आफ्टर दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में से एक आर्टिकल मैंने चूज़ किया है, आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 बोलता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। द स्टेट शैल प्रमोट विथ स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपुल and in particular of the scheduled caste and the scheduled tribes, and shall protect them from social injustice and all form of exploitations. Basically in this article we see three important parts and points are mentioned. First one is the state shall promote the educational and economic interest of the weaker section. State क्या करेगा? प्रमोट करेगा एजुकेशन को और इकोनॉमिक इंटरेस्ट weaker section people के. And the second one is this article mainly focuses on scheduled caste and scheduled tribes. Article 46 mainly focus scheduled caste और tribe के लोगों के ऊपर करता है. The state shall protect them from social injustice and all other form of exploitation. State in SC/ST लोगों को और other weaker section people को protect करेगा. Now we all know what was the reason of adding such article to Indian constitutions. The vast culture of Indian constitution, India has divided people on different categories on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth, etc. We talking about the caste system. Some people describe them themselves with upper caste. Well, some people address them with lower caste. Upper caste are Brahmin, Rajput, Jamindar, they are. Article 46 comes under directive principle of state policy, which is non-enforceable in the caste. That is not enforceable in court. That is state does not follow these guidelines or fails to do so for any reason whatsoever. We cannot move to the Supreme Court for its enforcement on the basis of Article 46. So for the protection of weaker section of the society, Constitution has given some more provisions in different articles like Article 14, Article 15, Article 16, 17 or other articles. This article mentioned in these ways talks about rights protects of the weaker section of the society. इसमें एक लाइन है अदर वीकर सेक्शन मीन्स जो लोग SC और ST के लोग नहीं हैं और उसके अलावा जो लोग हैं उन लोगों के पास ये जो एजुकेशन और जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी उन लोगों के पास नहीं है, उन लोगों को हम अदर वीकर सेक्शन बुलाते हैं. It refers to the section of people who do not belong to scheduled caste or scheduled tribe but suffers economic and educational backwardness similar to scheduled caste and scheduled tribe. तो बेसिकली आर्टिकल 46 ये बोलता है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं और तो अदर वीकर सेक्शन पीपुल हैं उन लोगों को हम एजुकेशन और इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट उन लोगों को दें.
एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इंजस्टिस एंड ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लोटेशन। एंड हम उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे सोशल इंजस्टिस से एंड सोशल एक्सप्लोटेशन से भी हम उनको रक्षा करें। थैंक यू।